ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रोल ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन लाइक टेट्रावेलेंसी, कैटनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Early stages of the development of chemistry, the main attention was paid to the compounds obtained from minerals, that is, from non-living sources. Such compounds were called inorganic compounds. After that, in 18th century, scientists कुछ अपना attention animal and plant sources से आने वाले compound को भी दिया, such as sugar, fats, oils. And these compounds obtained from animal or plant kingdom were called organic compounds. Therefore, compounds were classified mainly into two classes. That is, compounds obtained from non-living matter called inorganic compounds and compounds obtained from plant and animal sources called organic compounds. Organic chemistry has great importance in chemistry, biology and medicinal sciences. Its importance is not just due to its huge number of compounds, because organic compounds constitute life of molecules such as carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, which are present in living cells. This is the definition of organic chemistry. The organic chemistry is defined as the chemistry of the hydrocarbons and their derivatives. Then what is the hydrocarbons? Hydrocarbons mean the compounds of carbon and hydrogen. A large number of organic compounds also contain elements like nitrogen, oxygen, etc., which may be regarded to have been derived from hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms. So this is the modern definition of organic chemistry. Origin of organic chemistry. In the earlier period of development of chemistry, chemists tried their best to synthesize organic compounds in the lab, but they failed to prepare organic compound in lab. बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर पाए और उन्होंने सोचा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता, वो ओनली एनिमल एंड प्लांट सोर्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज हो सकता है, बट लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता। बट आफ्टर दैट फ्रीडरिच वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। इनफैक्ट वोलर ट्राइड टू प्रिपेयर एमोनियम सियानेट बाय हीटिंग एमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम सियानेट, but ammonium cyanide rearranged to form urea. Okay, then urea is the organic compound. After the accidental discovery of Wöhler in the field of organic chemistry, the synthesis of organic compound no longer remained a mystery and many organic compounds were prepared in lab. Then, what is the importance of carbon in the field of organic chemistry? Carbon is the most essential element of all organic compounds. Its nature of bonding with surrounding atoms. Atomic number of carbon is 6. The electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2. As it has 4 electrons in the valence shell, that is 2s2 and 2p2 is the valence shell of carbon. So here 4 electrons present in the valence shell of carbon.
It may be uh, 4 electron to form C4 minus ion, or may lose this 4 valence electron to form C4 plus ion. और कार्बन अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कार्बन एक कैटायन फॉर्म कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक कार्बन का एक एनायन फॉर्म हो सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी and low electron affinity of carbon. It can neither form carbon 4 plus cation nor carbon 4 minus anion in order to take part in ionic bonding with other elements. So कार्बन क्या करता है, उसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है डिफरेंट एलिमेंट के साथ. कार्बन एटम forms 4 covalent bonds in its compounds with other atoms. यहाँ पे देखो कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके ये क्या कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है. 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है. इसे हम ऐसे बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द टेट्राकोवैलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन एटम मेक 4 बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड. Then what is catenation? Catenation is the self-linking ability of an atom with other atoms of the same element, and this is the unique property of carbon. Carbon possesses maximum tendency for catenation in the periodic table because of the large strength of carbon-carbon bond as compared to that of other atoms. As a result, carbon atom can link with each other to form either linear chains, branch chains or rings of different size. यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक लीनियर चेन फॉर्मेशन कर रहा है. यहाँ पर ब्रांच चेन आप देख सकते हो. देन ring of different size, like carbon not only form only chain, it also form ring compounds like different size. Here the 3-membered ring of carbon, then this is the 4-membered ring of carbon. Okay, thank you so much for watching.